Here we go. So discuss the screened Coulomb potential. 5 marks. Question. Let's go to. No, sorry. This is not on screened Coulomb potential. This is on electron-electron interaction phenomena in a Fermi liquid. That's question number 14. So electron-electron interaction, the Fermi liquid, because of the interaction of uh, conduction electrons with each other through their electrostatic interaction. So interaction of conduction electrons कैसे करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर ही से वो लोग इंटरेक्ट कर पाएगा. द इलेक्ट्रॉन सफ़र कोलिजन्स. तो जो उनका कोलिजन्स होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से. फर्दर moving electron causes an internal an inertial reaction in the surrounding electron gas, thereby increasing the effective mass of the electron. ठीक है, the further moving electron causes inertial reaction. So inertial reaction मेरा क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे बोल रहा है कि इन सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन गैस thereby increasing effective mass, इसका मास ज़्यादा हो जाता है बोल रहा है. तो मूवमेंट मास ज़्यादा हो जाता है कि मतलब क्या, मूवमेंट कम हो जाता होगा स्टार्टिंग में और बाद में ज़्यादा हो जाता होगा, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो मोमेंटम बाद में ज़्यादा होगा. सो इनर्शियल रिएक्शन, ओके, इनर्शिया आ जाता है कहाँ से, फर्दर मूविंग इलेक्ट्रॉन कॉजेज एन inertial reaction in the surrounding moving electron cause inertial reaction the surrounding electron gas. ओके, मूविंग इलेक्ट्रॉन कॉज करता है बाकी लोग को भी इनर्शिया रखने के लिए, बिकॉज क्योंकि वो लोग सट नहीं सकता है तो उनके पास भी इनर्शिया आ जाएगा, दरबाई इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दैट कुड बी इट कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो बाकी लोग को भी साथ में मूव कराने को जाए क्योंकि वो लोग सटने नहीं मांगता, दरबाई इंक्रीजिंग इफेक्टिव मास. सो कोई चीज़ अगर मूव कर रहा है तो वो चीज़ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहा है तो मूव तो मूविंग इलेक्ट्रॉन में ये इनर्शियल रिएक्शन पता चलेगा. हाँ, उसी में पता चल पाएगा. द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन interaction are usually described within the framework of Landau theory of Fermi liquid. So I do not remember Landau theory of Fermi liquid. So you can go out from here. The object of theory is to give a unified account of effect of the interactions. ठीक है, कोहेरेंट अकाउंट देना है, एक्सप्लेनेशन देना है. फर्मी गैस is a system of non-interacting fermions. Fermi gas is a system of non-interacting fermions. Fermi gas बोल रहा है, ठीक है, गैस. गैस इज अ, इसमें नॉन इंटरेक्टिंग ये होता है, ये द सेम सिस्टम विथ इंटरेक्शंस. सो विथ इंटरेक्शंस है क्या है, फर्मी लिक्विड. It's called the Fermi liquid. Landau theory gives a good account of low-lying single particle excitations of system of interaction. Landau theory gives a good account for the low-lying single particle excitations of a system. ठीक है, तो सिंगल पार्टिकल को अच्छा से एक्सप्लेन कर पा रहा है. दीज सिंगल पार्टिकल एक्साइटेशंस आर, इसको ठीक है, एक्साइटेशंस को बोल रहा है क्वाजी पार्टिकल्स. ठीक है, सिंगल पार्टिकल एक्साइटेशंस आर कॉल्ड क्वाजी पार्टिकल्स. ठीक है, they have a 1-to-1 correspondence with single particle excitation of free electron. Low-lying particle excitation of the system of interacting electrons. These single particle excitations are called quasi-particles. ठीक है, single particle excitation. They क्या लिखा है, they have 1-to-1 correspondence with single particle excitations of free electron gas. ठीक है, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है मैच खाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का सिंगल पार्टिकल एक्साइटेशन से. अ क्वाजी पार्टिकल में बी थॉट, a quasi particle may be thought of as a single particle accompanied by a distortion cloud.
of electron gas. One effect of Coulomb interaction between electrons is to change the effective mass of the electron. In alkali metals, the increase is roughly of order of 25%. Okay. So these single particle excitations are called quasi-particles. They have one-to-one correspondence with single particle excitations of free electron gas. ठीक है, the quasi particle may be thought as a, ठीक है, तो फिर से एक्सप्लेन करा, quasi particle may be thought of as a single particle accompanied by a distortion cloud in electron gas. ठीक है, इन इफेक्ट ऑफ, मतलब जो भी कैलकुलेशन है उससे थोड़ा एरर रहेगा ये बाकी की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, तो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस फर्मी गैस अलग अलग चीज़ है। लो लाइन, ठीक है, फर्मी लिक्विड जो है को लैंड आउट थ्री अच्छा से एक्सप्लेन करता है गिवन फर्मी गैस सिस्टम ऑफ नॉन फर्मियन सिस्टम। ठीक है, तो फर्मी लिक्विड में इंट्रैक्शंस होता है और इसी में तुम्हारा ये आने लगता है, डिस्टॉर्शंस आने लग जाएगा क्वाजी पार्टिकल्स के साथ, जो तुम्हारा बहुत मैच खाता है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के साथ, जो तुम्हारा यहाँ फर्मी गैस शायद है। Not sure about that, but let's move ahead. ठीक है, so electron collisions. It is astonishing property of metals that conduction electrons, although crowded together only 2 Armstrong apart, travel long distances between collisions with each other. ठीक है, ठीक, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारा है लेकिन एक दूसरे से टकराता नहीं है। The mean free paths for electron collisions are longer than 10 to the power 4, यानी 10,000 Armstrong से ज़्यादा है at room temperature and longer than 10 centimeter at 1K. So 10 to the power 4 Armstrong at room temperature and longer than 10 centimeter at 1K. 1K is very small ये. So 10 centimeter ये पे 1 Kelvin पे और 10 to the 4 एम्पियर रूम टेम्परेचर पे Armstrong. Two factors are responsible for these long mean flaws, without which the free electron model of metals would have little value. ठीक है, which free electron model, ठीक है, तो ये two factors are responsible for these long mean free paths, without which free electron model of metals would have little value. So फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल भी इसलिए वर्क करता है क्योंकि ये मीन फ्री पाथ्स की वजह से। सो वी हैड एन एक्सप्लेनेशन जो था तुम्हारा इसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के लिए, लेकिन इसलिए वर्क करता है क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शंस नहीं हो रहा या फिर कोलिजन्स नहीं हो रहा। एंड द सेकेंड फैक्टर इज द स्क्रीनिंग ऑफ कूलम इंटरेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। द सेकेंड फैक्टर इज द स्क्रीनिंग ऑफ, ये क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ कूलम इंटरेक्शन। स्क्रीनिंग ऑफ कूलम इंटरेक्शन शायद ये क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन था। we show how the exclusion principle reduces the collision frequency of an electron that has low excitation energy even outside the filled Fermi sphere. We estimate that the effect of excitation exclusion principle of two-body collision between an electron in excited orbital 1 and electron in filled orbital 2 in Fermi C. It is convenient to refer all energies to the Fermi level mu taken as zero energy. Thus, E1 will be positive and E2 will be negative. Because of the exclusion principle, the orbital 3 and 4 electrons after collision must lie outside the Fermi sphere, or all orbitals within the sphere being already occupied. Thus, both energies E3 and E4 must be positive, referred to zero on the Fermi sphere. The conservation of energy requires that
mod of E2 is less than 1. For otherwise, E1 plus E3 plus E4 is equal to E1 plus E2 could not be possible. ठीक है, तो क्योंकि तुम्हारा क्या बोलता है, ये तुम्हारा E1 प्लस E2 पॉजिटिव आना चाहिए जो तुम्हारा यहाँ पे है E1, और ये भी तो पॉजिटिव है, ठीक है, E3 प्लस E4. सो दोनों इक्वेशन दोनों साइड पॉजिटिव आना चाहिए. दिस मीन्स दैट कोलिजन ऑफ आर पॉसिबल ओनली इफ द ऑर्बिटल 2 lies within the shell of thickness epsilon 1 within the Fermi sphere as the figure 18a. Thus the fraction E1 by EF of electrons in the filled orbital provide a suitable target. ठीक है, इतना ही टारगेट मतलब इतना का रीजन में हो सकता है, तो दैट्स द टारगेट फॉर यू. दैट इज़ व्हाट यू विल अलाइव पॉसिबल है ये वाला, ठीक है. सो दैट इज़ द टारगेट, या फिर दैट इज़ द प्रोबेबल या पॉसिबल जहाँ पे हम लोग ठुका सकते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन 1. बट इवन इफ द टारगेट इलेक्ट्रॉन 2 in the suitable energy shell, only a small fraction of the final orbital compatible with but even if the target electron 2 is in the suitable energy shell, only a small fraction of the final orbitals compatible with conservation of energy and momentum are allowed by the exclusion principle. This gives the second factor E1 by EF. ठीक है, सो सेकेंड फैक्टर यहाँ पे आ रहा है. ये पहला, ये वाला है फर्स्ट फैक्टर, ठीक है, E1 बाय EF. ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड ऑर्बिटल प्रोवाइड सुटेबल टारगेट फॉर इलेक्ट्रॉन 1. ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन 1 का पर्सपेक्टिव से. बट इवन इफ द टारगेट इलेक्ट्रॉन 2 इज इन द सूटेबल एनर्जी शेल, जो कि ये वाला था, ठीक है, even then only a small fraction of the finer orbitals compatible with the compatible energy conservation or momentum conservation are allowed by exclusion principle. ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फैक्टर आ रहा है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. दिस गिव्स द सेकंड फैक्टर विच इज E1 by EF. ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पे ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से यही फैक्टर क्यों आ रहा है. ये शायद इसमें एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इसको लास्ट में देखेंगे. In figure 8, 18c, we show that small sphere which has pairs of orbital 3, 4 at opposite ends of the diameter satisfy the conservation laws. Yay. Conservation laws. But collisions can occur only if both 3 and 4 lie outside the Fermi sphere. That was condition 1. Lying outside Fermi sphere, that's condition 1. Show that the sphere for which all pairs of orbital 3 and 4 outside opposite ends of the diameter satisfy the conservation law. Conservation law, second reason. The product of the two factors is E1 by EF ka square. If E1 corresponds to 1k and EF corresponds to 510 to the power 4k, we have E1 by EF equal to 4 into 10 to the power minus 10, the factor by which exclusion principle reduces the collision rate. The argument is not changed for thermal distribution of electrons at low temperature such that KBT is less than EF. ठीक है, तो लो टेम्परेचर्स में ये आर्ग्यूमेंट नहीं चेंज होगा. क्यों नहीं चेंज होगा? वी रिप्लेस E1 बाय थर्मल एनर्जी KBT. ओके, सो इस टाइम पे थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट लो टेम्परेचर में E1 को KBT से रिप्लेस कर दिया. नाउ द रेट एट विच इलेक्ट्रॉन कोलिजन टेक्स प्लेस reduced below the classical value by KBT by EF का whole square. So the effective collision cross section is this. So first it was found that ये होगा collision का कम करने के लिए. अभी बोल रहा है ये, क्योंकि लो टेम्परेचर में KBT लेना पड़ेगा मच लेस दैन EF एनर्जी EF. ठीक है, thermal energy KBT, and now the rate of which electron collision takes place reduces the classical value. So इसका मतलब क्या हो गया? KBT देखते हैं, where sigma naught the cross section for the electron interaction, the interaction of one electron with another
has a range of order of the screening length 1 by ks, as in 34. Numerical calculations give the effective cross section with screening for collisions between electrons as the order of 10 to the power minus 15 centimeter square or 10 Armstrong a square in typical metals. The effect of electron gas background in electron electron collision is to reduce sigma naught below the value of expected from the Rutherford scattering equation for the unscreened Coulomb potential. However, much greater reduction of cross section is caused by poly factor. So this इसको poly factor बोल दे रहा है and इसको poly factor नहीं बोल रहा है, ठीक है, this thing, या फिर है कि let's see. At room temperature, typically kBt is 10 to the power minus 2, kBt by EF is 10 to the power minus 2. So, sigma is approximately 10 to the power minus 4. Sigma naught is 10 to the power minus 19 centimeter square. For mean free path for electron-electron collision is L is equal to 1 by N naught A. That is approximately 10 to the power minus 4 at room temperature. This is longer than the mean free path due to electron phonon collision by, this is longer free path, electron phonon collision by at least a factor of 10, so that at room temperature collisions with phonons are likely to be dominant, ठीक है, क्योंकि उसका छोटा है लेंथ फ्री पाथ का. At liquid helium temperature, a contribution proportional to t square has been found in the resistivity of metals, resistivity of a number of metals constituent with form of electron-electron scattering cross section. The mean free path of electron in indium at 2K to Kelvin of the order 30 centimeter as expected in 63, this one 63, the mean free path of electron in the thus the Pauli principle explains the central question of theory of metals: how do the electrons travel long distance without colliding. ठीक है, इसको अब देख लेते हैं इसमें क्या एक्सप्लेन किया है. Figure 17, collision between two electrons, wave k1 k2. The collision of particles have wave vector k3 k4. The Pauli exclusion principle allows collision only for final state k3 where the which were vacant before the collision. ठीक है, तो Pauli principle तुम्हारा ये है, और उसका पॉजिटिव वाला एक और दूसरा पहला रीजन था. द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनिशियल ऑर्बिट्स वांट टू कोलाइड विद द ऑर्बिटल्स 3 and 4 इनिशियली आर वेकेंट, तो वेकेंट होना ज़रूरी है. यहाँ पे क्या है 3 and 4, इसमें बाहर है, इसमें क्या है 3 and 4 का अंदर घुसा दिया, तो शायद उसमें बोलेंगे नहीं हम. Initially vacant, the electrons 1 and 2 can occupy orbitals 3 and 4. After the collision, energy of momentum are conserved in B. This one in B. The electrons in initial orbits 1 and 2 have no vacant final orbits available that allow energy to be conserved. Orbitals such as 3 and 4 would conserve energy at momentum, but they are already filled with other electrons. In C, we have denoted with X the wave vector of the center of mass 1 and 2. So 1 and 2 का ये जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर में एक एक्स बना हुआ है. 1 का है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, और इनका सेंटर यहाँ पे सेंटर इसको लिया है. इसका क्या यूज़ है? We have denoted with X the center of mass 1 and 2. All pairs of orbits 3 and 4 conserve momentum and energy if they lie opposite to the diameter of the small sphere. Opposite to the diameter of the small sphere. Opposite to the diameter of the small sphere. तो diameter of the small sphere होगा this, और ये दोनों diameter के दोनों opposite sides हैं.
तो इस तरह से मैथ्स वो है जो फुलफिल होगा। ठीक है, दैट्स ओके। स्फीयर, the small sphere was drawn from the center of mass pass through ये, but not all pairs points 3 and 4 are allowed by the exclusion principle. Both 3 and 4 must lie outside the Fermi sphere. The fraction allowed is this. Okay, must outside the Fermi sphere, the fraction allowed is this though. So this is why बहुत ही छोटा ये होता है. So there are few reasons. ये लोग का जो सम है वो पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पे इस इक्वेशन में, ये पॉजिटिव होने का था, ये चीज़ पॉजिटिव होने का था, दिस थिंग शुड हैव बीन पॉजिटिव. सो ये एक रीज़न हो जाता है. फिर उसके बाद और क्या है, एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. फिर यहाँ पे किस तरह से ये लोग अपने आप को अरेंज करता है, ये स्टेट्स बाहर भी होना चाहिए और साथ में इस डायमीटर का ऑपोजिट्स होना चाहिए. तो ये पॉजिटिव के लिए ये रिलेशन है. ये है तुम्हारा, इससे भी तुम्हारा ये आता है 1/E1/EF, और यहाँ से भी आता है तुम्हारा E1/EF कि जब ये सेंटर का डायमीटर का ऑपोजिट में 3 and 4 स्टेट्स होना चाहिए. सो दैट्स इट.